Yeah, just my voice is. Yeah, my voice is audible. Yeah, just a second. Yeah. So very good afternoon, guys. Welcome to Bank Nifty weekly expiry. So today, if you see, starting from the market, Nifty is outperforming. Mid cap, small cap is outperforming. They have hit new lifetime highs. Bank Nifty also has seen a good momentum in the first hour of the session. It opened marginally positive, and from 9:30 to 10:30 there was good momentum of almost 300-400 points on the upside. It opened near around 49,800-850 levels, and then slowly gradually it moved towards 50,200 zones. पोस्ट दैट अगर उसके बाद हम अगर देखा जाए, अगर चार्ट सेटअप वाइज, सिंस आफ्टर दैट, आफ्टर ऑलमोस्ट 10:30-11 के बाद मार्केट एक रेंज में हो गया है. ऊपर से हमने थोड़ा कूल ऑफ देखा है 300 पॉइंट्स का, फ्रॉम 50,200 टू 49,900 लेवल्स. So all in all, if we see, market is in good momentum. Broader market, we have seen stupendous rally, mid cap, small cap, good rally seen in sugar sector, reality, selective auto names, cement pack, and so good momentum is seen. As today we have Bank Nifty expiry, so we will focus more on Bank Nifty. And in the meantime, we'll also talk about the stock ideas कि कौन से stocks अच्छे लग रहे हैं. बीटीएस के आइडियाज के बारे में बात करेंगे, क्या स्टॉक क्वेरीज है कि क्या नए अच्छे आइडियाज लग रहे हैं. So we'll discuss one by one. First, starting with Bank Nifty. If we see from a overall intraday perspective, Bank Nifty seen a good momentum from 49,850 levels to 50,200, and post that we have seen some cool off. 11 साढ़े 10 11 के बजे से हमने कंटिन्यूसली थोड़ा कूल ऑफ देखा है, एंड इट करेक्टेड ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स फ्रॉम हायर जोन्स. बट द गुड पार्ट इज दैट इट इज होल्डिंग एट हायर लेवल्स. सो निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस है, बैंक निफ्टी में रिलेटिवली आज थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस थी. पिछले 2 दिन से मार्केट एक रेंज में था, बैंक निफ्टी स्पेशली. सो ऑल इन ऑल, फ्रॉम अ सपोर्ट परस्पेक्टिव, बैंक निफ्टी immediate support is seen at 49,750, 49,800 zones. So it's a very crucial level. 49,750, 49,800 zone is a support zone for Bank Nifty. Whereas on the upside, hurdle is seen at 50,050, then 50,200 zones. So this is the broader range for Bank Nifty: 49,850, 49,800 to 50,050, 50,250 zones. If I go on the intraday chart also, from where the breakout was seen near 49,750 के लेवल से हमने ब्रेकआउट देखा था, वहां से थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम देखें, सो रिवर्सल आया है फ्रॉम द लोअर लेवल्स, एंड इन लास्ट 7 to 8 मिनट्स अपटिक हमने देखा है. ऑलमोस्ट 70 to 80 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी मोमेंटम देखा है. सो ओवरऑल बायस, फर्स्ट की पॉइंट इज विल बी ऑन पॉजिटिव. बैंक निफ्टी जब तक 49,800 के ऊपर रहता है स्पॉट लेवल्स में, विल गो ऑन द पॉजिटिव साइड. सो अब इसके लिए हम कौन सी स्ट्राइक्स पहले ट्रैक करेंगे. सो देयर आर टू स्ट्राइक्स दैट विल बी ट्रैकिंग सो फार: 49,800 एंड 49,900 कॉल साइड ऑन द बैंक निफ्टी, विद दैट व्यू दैट जब तक बैंक निफ्टी 49,800 होल्ड करता है स्पॉट लेवल्स में, वी कैन सी एन अपटिक टुवर्ड्स 50,050, 50,100 लेवल्स. सो दो स्ट्राइक्स हमने डिस्कस किया एज ऑफ नाउ: 49,800 कॉल एंड 49,900 कॉल. लेवल्स एंड एवरीथिंग विल अपडेट कि कौन से लेवल पे एंटर करना चाहिए. बायस ओवरऑल हमारा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में पॉजिटिव है. अब इसी के साथ अगर हम निफ्टी का चार्ट भी देखें, सो निफ्टी इज इन स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस. हमने मंडे को फ्रेश ऑल टाइम हाई देखा था, आज भी काफी अच्छा मोमेंटम है. सो निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात करें, निफ्टी जब तक 23,200 250 के ऊपर रहता है, 23,200 लेवल्स के ऊपर, अब बायस वुड बी पॉजिटिव फॉर एन अपसाइड मूव टुवर्ड्स 23,500 लेवल्स, 23,600 जोन्स. बट हमें एक और चीज ध्यान रखनी है, काफी अच्छी रैली हमने पिछले कुछ दिन में देखी है. सो जनरली इंडेक्स थोड़े बड़े मूव के बाद कंसोलिडेट भी करता है. सो निफ्टी में 23,250 मेजर सपोर्ट है, अपर बैंड में 23,500, 550 का हॉर्डल है. सो ये अभी हमने डिस्कस किए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में. along with that, very good action is seen stock specific also. काफी अच्छा एक्शन देख रहे हैं हम ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में भी. सो कपल ऑफ आइडियाज है देयर. फर्स्ट वी हैव शेयर इज जियो फाइनेंस. सो ओवरऑल देखा जाए तो लार्ज कैप्स में काफी अच्छा मूव हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में, एंड ओवरऑल सेक्टर रोटेशनल भी काफी अच्छा चल रहा है. सो जियो फिन का हम अगर ओवरऑल चार्ट सेटअप देखें, सो ऊपर से काफी हमने कूल ऑफ देखा था, अभी एक फ्रेश रेंज ब्रेकआउट दिया है अराउंड 350 टू 350 के ऊपर. सो हमें लग रहा है कि यहाँ से 3 to 4% अपसाइड दिख सकता है, 365 370 लेवल तक का.
So GeoFin would be a good level, good entry point at current levels, with keeping stop loss of 347 for an upside move towards 370 levels. Just to repeat, for Bank Nifty, our bias is positive. 14,800 is the major support. Upper band 50,050, 50,150 is the resistance zone. 14,800 call and 14,900 call we are tracking, and will update on which strike to play for. So these are the two strikes that we are tracking, and we'll update which levels we can enter. In the meantime, Anuj, what we can do is we can look we can go through few stock queries, and then accordingly can play it. Yeah, if you see the Bank Nifty chart, so Bank Nifty on 15 minutes, it is still forming lower highs. Some base formation seen near 14 and 800 levels, and नीचे से हमने 100 पॉइंट की रिकवरी देखी है. So we are tracking that, and soon we'll update on which strike to play out for. Uh, yeah, sorry, Anuj, can you just repeat the name of the stock? Hmm. IRFC, yeah. So if you see, we have seen good momentum across broader market, and if I'll just open up the chart for IRFC, I'll just see the chart. And overall, if you see the bigger time frame structure on the daily scale, if you see the chart is overall good momentum is seen from past couple of session, and आज especially intraday chart पे भी एक अच्छा uptick देखा हमने, and on the daily basis also if we see overall the stock is in range from 170 levels to 182. हमें लग रहा है 182 के ऊपर फ्रेश मोमेंटम आ जाएगा 185 188 के लेवल्स तक का. सो आईआरएफसी सेटअप वाइज पॉजिटिव ही है. जब तक 174 होल्ड करता है बाइस वुड बी पॉजिटिव. आईजी Yeah. So IGL, if we see the overall daily structure, it is trading in a range between 445 levels to 480 levels. And if we see from काफी टाइम हमने 480 के वहां से थोड़ा प्रेशर देखा है, बट इस बार देखा जाए तो ओवरऑल एनर्जी और गैस स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है. सो आई थिंक 484 की क्लोजिंग के ऊपर फ्रेश मोमेंटम हो जाएगा टुवर्ड्स 500 लेवल्स तक का. सो 484 के ऊपर और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो जाएगा टुवर्ड्स 500 जोन्स. Fact, right? So fertilizer stocks, as monsoon season has picked up and we have seen good momentum overall. Yesterday we have seen a very sharp rally of almost 8 to 10%. In fact, today I'll just see the overall chart specific also. Generally, if we see the bigger trend of the stock is in a broader range. ऊपर के लेवल से हमने थोड़ा कूल ऑफ देखा है. सो आई थिंक 740 750 वुड बी अ गुड एंट्री पॉइंट. 740 740 की रेंज में आपका वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट रहेगा. 700 के स्टॉप लॉस से धीरे धीरे 820 850 के लिए फैक्ट में ओवरऑल बायस पॉजिटिव रहेगा. ओएनजी से. So if I see the overall chart setup from the energy space itself, काफी बड़ा हमने अपमूव देखा था, बट इलेक्शन के बाद एक ऑलमोस्ट 10 to 12% का डेंट देखा था. नीचे से हमने 6 दिन से रिकवरी देखी है. सो आई थिंक 282 इज द मेजर रेजिस्टेंस लेवल. अगर किसी ने पोजीशन नीचे ली हुई है सो 282 284 वुड बी अ गुड एग्जिट पॉइंट या प्रॉफिट बुक करना चाहिए. फ्रेश तेजी 285 के ऊपर ही हम सजेस्ट करेंगे. सो 282 283 लेवल्स भी अ गुड एग्जिट पॉइंट और प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट. MMTC.
So yeah. So after this MMTC, if we see from past couple of weeks, it's trading in a range between 68 to 78, and I think above 78 we can see a fresh momentum towards 85 levels. आज अच्छे वॉल्यूम्स भी हुए हैं, गेन्स को अपने होल्ड भी किया हुआ है, हाई राइज का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है. सो आई थिंक ओवरऑल बाइस पॉजिटिव है टुवर्ड्स 85 लेवल्स. ओवरऑल स्टॉक का नेचर थोड़ा हाई बीटा रहता है, सो ऑलवेज कीप स्टॉप लॉस इन माइंड. 72 मेजर सपोर्ट हो जाएगा, अपर बैंड में 85 वुड बी अपसाइड टारगेट. Also, in the meantime, I'll just go through the bank nifty also, as we have already discussed about the strike. We were discussing 49 800 and 49 900 strike. So if I just go through the chart also, if intraday, if I just see a good move we have seen on intraday charts, and I'll just see to the strike of 49 900. And if I see what is the price, it's quoting around 102 levels. So I think looking at the overall chart setup wise, 49 900 को call हमारे radar पे रहेगा, and we are likely to go with this call. हम जैसे बात करें तो 49 9 800 850 मेजर सपोर्ट है. So 49 900 is the call that we are tracking. 105 is the trading right now. Immediate basis it made a low of around 60 65 levels. So 49 900 call, again I'll repeat, right now it's quoting around 9900 levels. With update की कौन से level पे we can buy and stop loss के साथ. So right now it's tracking or trading around 100 levels. I think we'll wait from some cool off. अगर cool off नहीं हुआ, so we'll buy in momentum. So 49 900 call we are tracking. Right now it's quoting around 111 levels, and bank nifty spot is around 50,000. So I think good entry point would be between 90 to 100 levels. I'll repeat, 49 900 कॉल आप बाय कर सकते हैं 90 से 100 की रेंज में. अभी 110 चल रहा है. 55 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 135 और फिर 155 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी कॉल वुड एडवाइस. सो आई रिपीट, 49 900 कॉल राइट नाउ इज कोटिंग अराउंड 110 लेवल्स. 90 से 100 की रेंज में हमारी बाय करने की सलाह रहेगी. 55 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 135 और 155 के टारगेट के लिए. राइट नाउ इट्स कोटिंग अराउंड 100 लेवल्स. आई थिंक Anuj, you can just pin it as well. Yeah. So right now it's quoting on 108, 107 levels. A good favorable would be between 90 to 100. Stop loss would be 55, upside 135, and then 155 levels. Also, guys, keep this thing in mind. Overall, the market has been on the buy on dip stance since morning. We are playing that, और हमारा bias positive है, but momentum काफी slow है, इसके लिए हम थोड़े से dip पे buy कर रहे हैं. और अभी 9900 चल रहा है, तो हमारी buying zone 90 से 100 के बीच में है. So इसके लिए हम बोल रहे हैं कि थोड़ा cool off हुआ है, so better रहेगा. And as we've seen, we'll also see the strike also, and some premium has cool off from high levels. Yeah, apart from that also, if I just see 49 900 call is now around 88 90 levels. So the buy zone has been triggered. A buying zone is between 90 to 100 range, and right now it's around 87 88 levels. 85 88 and 49 900 call 83 84. Also, it's important, keep this in mind, stop loss will be 55. That's very important. And why we are going with in the money strike, because as we're expecting the momentum is slow, so we're expecting to take the benefit of the in the money strike. Yeah. Also, Anuj, in the meantime, as we're discussing, some cool off is seen from high levels in the call. I think definitely buy would have been trigger. Yeah,
Yeah. So Bank Nifty trade we have already given. In the meantime, also Anuj, we can take few stock queries also in the meantime. GeoFin we have already recommended the idea that we have flashed in the terminal also. And apart from that, we can take few stock queries and then we'll update on the other ideas as well. In the meantime, as we have already discussed about Railtel also, IRFC, so another railway stock is picking up momentum, that is Railtel. So Railtel, as we have seen good momentum across all the railway stocks and good momentum is seen. So Railtel is one of the BTST ideas that we have shared, given at 423, keeping stop loss of 413 for an upside move towards 435, 440 levels. So another railway stock we have suggested Railtel, and Geofin we already recommended at the start of the session. Zomato. So if I see overall Zomato, if we see the structure wise, overall the bigger trend structure is positive, but issue over here is it has got stuck in a range. So immediate basis 175 is a major support zone. Upside major momentum to be seen above 187, 188 levels. So 187 एक hurdle है, नीचे 175 का support है. So इसी रेंज में हमें ट्रेड करना पड़ेगा एंड ओवरऑल बायस वाइज पोजिशनली वाइज इट्स पॉजिटिव. इमीडिएट बेसिस में मोमेंटम मिसिंग है. Arvind hold. So Arvind Limited, right? Yeah. So if I see the overall structure for Arvind Limited on the bigger time frame structure, if we see good momentum has been witnessed, but on today's it is consolidating between 366 to 3870 78 levels. So major support है 360 का. जब तक इसके ऊपर है बाइस पॉजिटिव है. पिछले 5 से 7 दिन हमने अच्छी रैली भी देखी है ओवरऑल मार्केट में. सो आई थिंक बेटर टू बुक प्रॉफिट्स एट करंट लेवल. वापस डिप आता है तो हमारी सजेस्ट करने की सलाह रहेगी अराउंड 360 लेवल पे एंटर कर सकते हैं. बैंक निफ्टी ट्रेड हमने जो इनिशिएट किया था 49,900 का, अभी चल रहा है 60 एंड स्टॉप लॉस हमने दिया है 55 का. सो गाइस यू हैव टू फॉलो द स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो 55 के नीचे होता है सो इट्स बेटर टू एग्जिट एंड टेक द हिट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द स्टॉप लॉस लेवल स्ट्रिक्टली. Yeah, so someone has his stop loss hit. So right now it's around 62, 63, 58 मारा था, 62 चल रहा है. वापस अगर 55 के नीचे जाता है बेटर टू टेक एसएल बिकॉज ऑप्शन में स्टॉप लॉस फॉलो करना, रिस्क मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वो हमें क्लियरली फॉलो करना है. 63, 64 वी आर क्लोजली ट्रैकिंग इट. कीप दिस थिंग माइंड. अगर 55 के नीचे रहता है सो प्लीज टेक दी एसएल. कोई अगर फ्रेश अपॉर्चुनिटी मिलेगी सो विल अपडेट. या अनुज. So if I talk about Yes Bank, overall the bigger structure has been under pain, and in spite of market at all-time high, the bigger trend is still under pressure. और काफी हमने अंडर परफॉर्मेंस देखी है. तो काउंटर ओवरऑल एक रेंज में है. नीचे 22 का एक मेजर सपोर्ट है, ऊपर में 26 का एक रेजिस्टेंस है. सो आई थिंक फ्रेश पोजीशन ऐड नहीं करनी चाहिए. कोई ऑलरेडी अगर पोजीशन है तो उसको 26 या 28 के लेवल पे एग्जिट करने की हमारी सलाह रहेगी. करंट लेवल पे तो हमारी बाय करने की भी सलाह नहीं रहेगी. ओवरऑल रेंज बाउंड काउंटर है सो बेटर इसको शिफ्ट करके आप कोई बेटर प्राइवेट बैंक्स में जा सकते हैं लाइक आईसीआईसीआई और एक्सिस. Yeah. So HDFC Bank. So HDFC Bank has been another underperformer, and no major move has been seen in HDFC Bank. So overall range wise देखे तो एक 100 पॉइंट की रेंज में है HDFC बैंक पिछले काफी टाइम से. ऊपर 1600 और नीचे 1500. जैसे हम बात करें बैंक निफ्टी के बारे में कॉल किया और HDFC बैंक सबसे बड़ा हेवी वेट है. सो वही जो कॉल हमने सजेस्ट किया था 49,900 का, इट मेड अ लो ऑफ अराउंड 58 एंड वहां से हमने अपटिक देखा 80, 82 लेवल्स तक का. सो दैट्स व्हाई वी सजेस्टेड कि स्टॉप लॉस स्टिल फॉलो करना, बट वो हिट नहीं हुआ था. अभी 83 आया है. सो द ट्रेड इज स्टिल ओपन. द लेवल्स वुड बी सेम.
ऑल्सो बिकॉज बैंक निफ्टी एक रेंज में है तो वो लेवल सेम रह गए. अभी जो 14,900 का कॉल दिया हुआ है 77-78 चल रहा है. एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करें तो 1530 का एक मेजर सपोर्ट है. अपर बैंड में 600-610 का एक रेजिस्टेंस है. ओवरऑल पॉजिटिव टू रेंज बाउंड काउंटर. में देखना नहीं बंदो. Yeah. So the call is still trading near 73-74 levels. Our stance would be same. Follow stop loss of 55. अभी भी हमारा वही stance है because our agenda was to buy on dip. We attempted that, but वहाँ से थोड़ा और dip आया है. So levels are same. अभी call चल रहा है around 70 levels. It made a high of around 82 levels और अभी उसी range में है. So levels would be same. 55 would be the SL. Upper band में थोड़ा सा momentum आएगा. So we can see uptick towards 1995 levels. 49,900 call is still open and जो भी update रहेगी definitely will update on the same. In the meantime, we discussed two stock ideas, that is Geofin and Railtel, that is looking good. Also, tomorrow we have Nifty expiry. So obviously every day we have expiry day. So the instruments keep changing, but the process, the risk management should be same irrespective whether we are making money or whether we are losing. Because risk management is very crucial, especially on the losing trade, and on the winning trade also. It's important to book profits. Unitech bought at. Yeah. So if I see over the chart structure, a lot of low bid up. Penny stocks have seen a sharp up move. So if we see the daily structure, it is circuit to circuit counter, and I think 13 would be a good exit point. अगर किसी ने पोजीशन होल्ड की हुई है तो 13 के लेवल तक का वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की हमारी सलाह रहेगी, बिकॉज ये सब काउंटर थोड़े हाई बीटा रहते हैं and generally we see a sharp move. So 13 level would be a good exit point or to book profits. Already आपकी buying price नीचे है, so 13 level would be a good to book profits. Yeah. In copper, overall we have seen sharp movement in last month, but post election the counter has gone sideways. So immediate basis पे 315 320 का एक मेजर सपोर्ट है. अपर बैंड में 350 इज अ रेजिस्टेंस जोन. सो जब तक ये 320 के ऊपर रहता है बायस वुड बी पॉजिटिव. अपसाइड में 350 एक रेजिस्टेंस जोन है, बिकॉज इलेक्शन के बाद हमने एक बड़ा फॉल देखा था. सो ये रेंज को ही प्ले करना पड़ेगा हिंद कॉपर में 325 से लेके ऊपर 350 की रेंज में. Also on the update of Bank Nifty call, the call is right now trading around 63, 60 levels. So 55 is the SL level. Kindly keep that level in mind. हम क्लोजली ट्रैक भी कर रहे हैं राइट नाउ अराउंड 58 59. जैसे अगर हिट होता है सो विल अपडेट ऑन इट एंड द ट्रेड इज स्टिल ओपन. वी अटेम्प्टेड बट देयर इज नो मेजर फॉलो अप सी. नो वरीज, अगर वापस अपॉर्चुनिटी रहेगी सो विल अपडेट. It has made a low of 54 55, so the level has got breached, so better to exit. Right now is around 50 51 levels. Better to exit losses because that's the concept of option buying, कि अगर ट्रेड वर्क नहीं हो रहा है सो बेटर टू एग्जिट एट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेवल्स. Yeah, so that's what I'm analyzing, Anuj. I'm also just scanning the Bank Nifty chart, and we have seen uptick, but post that we've again seen some follow up was missing at high levels. So we attempted, it didn't work. अगर कोई भी fresh opportunity रहेगी, definitely we'll update, and as per the setup, we'll update with the trade कि अगर कोई better opportunity मिलती है तो आपको definitely update करेंगे chat box पे भी, and we'll talk about that. In the meantime, two ideas we have shared, that is Railtel and RFC, Railtel and Geo. Along with that, one more idea from a positional perspective looking very good, that is Ultratech. So Ultratech Siemens space has seen a very good buying across couple of sessions, and Ultratech technically has given range breakout after almost 23 weeks, and it's looking good. We have seen already 3 to 4% rally in last couple of sessions,
But from a positional perspective, another 5 to 7% upside move can be seen. So from the cement pack, Ultratech and Grasim looks quite strong. So this would be a preferred pick within the cement pack. Also, yeah, yeah. So adding to your what you have rightly mentioned, our main agenda and main purpose is to generate the right kind of trades and make the maximum benefit. But in the course of time, sometimes it doesn't work, sometimes it works wonderfully. So we have to be supportive. Definitely, we try our level best. But as we are in the field of option buying, where the consistency is the key, as rightly mentioned by Anuj also, we try to generate 60-65% accuracy out of 100%. That's quite commendable, but certain days it doesn't work. So there is no worry. It's important we follow risk mechanism and be supportive, and there will be ample opportunities going forward, as we have everyday expiry day. Tomorrow we will have Nifty, day after we'll have couple of expiries of BankX, mid cap, and likewise. So there will be ample opportunity. Please be patient and be supportive and look for the better setups. So far on the Bank Nifty, we don't have any new fresh trade setup, as the market is all again got stuck and some profit booking seen from higher levels. So there is no trade from the index perspective. We can just take one or two more stock queries, and then we can just close it out there. Anuj, you are on mute. So top three sectors, one would be auto pack. Auto index has been a favorite sector from past couple of months, and from within auto pack, Bajaj Auto, Ashok Leyland, and Exide would be a preferred pick within auto space. The next sector would be pharma sector. So pharma sector is given a range breakout after almost 3 months. Within pharma space, our top pick would be Cipla, Sun Pharma, and Apollo Hospital. And third sector would be, overall looking at this setup wise, would be cement space. So cement space, as you already discussed, Ultratech, Grasim would be a preferred pick within that sector. So generally, if you see, generally our BTST trade is for a couple, 1 day itself, and good momentum we have seen across the housing companies in last couple of sessions. But if you see overall chart specific from a bigger time perspective, setup is quite important, strong, but it is at major level. So I think from past 6 days you've seen a good rally. Would advise to book profit at current juncture. 816 is the spot levels. We'd advise to book profits or trail SL to 795 levels.
Thank you all. Thank you all for joining.